This go with the flow is the biggest scam of the world. Best friend is even more riskier क्योंकि if it doesn't work out, you lose a friend also. There's a very thin line between healthy jealousy and manipulation. But there's nothing called being perfect in a relationship. Two imperfect people coming together and making it work every single day. Stonewalling is one of the contributor that predicts divorces and breakups in future. It goes to an extent where you start hating yourself, which is why a lot of these extramarital relationships also take place. Either they make through or they slip into depression, or maybe they just slip into substance abuse. 70% of your tonality and the rest is what you speak. और आप आपके एक्स के साथ can you remain friends after some time? You can't. Ekta Dixit ji, welcome to the LSM podcast. It's so great to have you here for the first time. Thank you for having me. And relationships के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे. तो first question हमारा था कि should you date your best friend? That depends. It's very subjective. जब आप कहते हैं कि best friend को date करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, completely depends on whether this best friend of yours is aligned with you or not. अब आप सोच रहे हैं कि देखो, एक बेस्ट फ्रेंड अच्छा कंपेनियन होता है जो आपको समझता है कि आपकी इमोशंस क्या है, आपके वैल्यूज़ क्या है, आपके गोल्स क्या है, बिकॉज यू शेयर्ड अ ह्यूज चंक ऑफ योर लाइफ विद दिस फ्रेंड ऑफ योर्स. बट अगर वो इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड है पर एज अ पार्टनर, सी समटाइम्स यू आर ग्रेट एज एन इंडिविजुअल, शी इज़ ग्रेट एज एन इंडिविजुअल, बट यू एज कपल्स इफ यू आर नॉट अलाइंड इट वोंट मेक सेंस. तो आई थिंक अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपको वैल्यू करता है, आपको समझता है, मेक्स यू फील हर्ट एंड सीन, एंड इफ द पर्सन इज एक्चुअली फुलफिलिंग योर non-negotiables, then you should date your best friend. ये हर्ड एंड सीन क्या होता है? बहुत सारी बार सुनने में आता है, you know, psychologists talk about feel seen, feel heard. ये exactly होता क्या है? तो बेसिकली इफ सिंपल फंडा है, सिंपल, जैसे लेट्स जस्ट गो बाय व्हाट इट सेज, हर्ड एंड सीन, व्हिच मीन्स कि आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है कि अगर अभी एट दिस पॉइंट सपोजिटली इफ आई एम नॉट फीलिंग राइट इन माई हेड स्पेस, आई हैव हैड अ लॉन्ग डे एंड दिन अच्छा नहीं रहा, बट इफ यू नो आई कम बैक होम एंड माई पार्टनर इज नॉट एक्नॉलेजिंग दैट आई एम नॉट फीलिंग राइट, या he did not sit with me or understand कि अच्छा मुझे क्या फील हो रहा है at this point, and just ignored and he was busy with his work. तो did I feel heard and seen? No. I wanted someone to acknowledge me that I am there, my presence. Someone, जब हम heard and seen की बात करते तो which also by default means that you are being desired by your partner. तो heard and seen वो होता है कि मेरा पार्टनर मुझे एक्नॉलेज कर रहा है, मेरी प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर रहा है, विच मीन्स ही वैल्यूज मी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जब हमको लगता है कि सामने वाला मुझे वैल्यू दे रहा है तो हमको फील होता है कि मेरी कोई वैल्यू है, विच मीन्स दिस पर्सन डिजायर्स मी इन सम और द अदर फॉर्म, एज अ पार्टनर, एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड, एज कलीग्स, व्हाटएवर. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिस इज कॉल्ड बीइंग हर्ड एंड सीन इन अ रिलेशनशिप. नाइस. हर एक रिलेशनशिप एक रिस्क होता है, राइट? ये जो बेस्ट फ्रेंड वाला क्वेश्चन है, इस पे एक फॉलोअप है. बेस्ट फ्रेंड इज इवन मोर रिस्कियर क्योंकि इफ इट डजंट वर्क आउट, नॉन अलाइनमेंट और बढ़ जाएगा, लूज अ फ्रेंड ऑल्सो. तो हाउ शुड आई नो कि इनिशियल स्टेप्स क्या है टू नो कि It's worth the risk. इट्स वर्थ टू टेक दैट अलाइनमेंट? मुझे 6 महीने 7 महीने बाद पता चलेगा व्हेन आई स्टे अराउंड. ऑफ कोर्स आई थिंक उसके पहले जब आप बेस्ट फ्रेंड क्यों होते हो, जब आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें अलाइंड ऑलरेडी है इस इंसान के साथ, बट देन यू ट्राइंग एंड टेस्टिंग कि अच्छा दिस पर्सन हैज फीलिंग्स फॉर यू, यू हैव फीलिंग फॉर दिस पर्सन. सो ऑब्वियसली अगर वो चीज़ें दोनों तरफ से है देन इट मेक्स सेंस, राइट, टू ट्राई एंड टेस्ट. बट अगेन रिस्क तो है बाय डिफॉल्ट, बिकॉज अगर नहीं चला तो क्या करोगे? सी ये तो फैक्ट है that you can never go back to being friends again because there's always some or the other kind of attachment involved in a relationship. And इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप 100% श्योर हो इस इंसान के लिए that this person also likes you, तब जाके उसको प्रपोज करो, तब जाके you know communicate with this person saying कि listen I have feelings for you. But if you think कि यार अगर we are best friends but she doesn't give me those hints as any girl would give me or a guy would give me, then don't go forward. तो ये hints क्या होते हैं? How do people give hints? I think easy तरीके where a person
अंडरस्टैंड्स यू, नोज कि आपकी बहुत सारी फ्लॉज भी है बट आपके बुरे टाइम पे अच्छे टाइम पे आपके साथ है, wants to spend more time with you, looks forward to seeing you all the time, most of the times, आपको encourage करते हैं to become better in your life, कि अच्छा you know what, if basically देखो as best friends तो आप डिस्कस करते हो कि ये मेरी गोल है, मुझे ये अकम्प्लिश करना है, जैसे आप आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ बात तो करोगे कि अच्छा you know what, ये 2024 का मेरा ये गोल है, I want to finish this, I want to do this. तो if your best friend really knows you or has feelings for you, will always ensure that you know you are kind of doing better, knows where you're coming from, which means ki you will also sense a little bit of healthy jealousy if you know you try to flirt around someone else. It's like, listen, you can't do that, you can't do this. ये सब बहुत अच्छे signs हैं. ये सब अच्छे signs है. See, again there's a very thin line between healthy jealousy and manipulation. तो ये सारे साइंस है ना, आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है. एंड कभी कभार हम इनिशियली इसको एज अ अच्छी जेलेसी ले लेते हैं, बट लेटर व्हेन वी गेट इनटू रिलेशनशिप वी रियलाइज दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव. इससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो. तो यू हैव टू बी रियली वेरी ऑफ दीज थिंग्स. तो साइंस आपको ऐसे पता चलते हैं. एंड बहुत लोग कहते हैं अरे मैं तो उसको हिंट दे रहा हूँ बट ये लेती ही नहीं. तो यार communicate करो. That's the way. I think we're not living in some 1860s right now. We're living in this generation where communication is the key. तो अगर आपको कोई इंसान पसंद है तो उससे communicate करो. Know that there's, if it's worth the risk and if it's not worth the risk, कि आपको लगता है कि best friend एक friendship भी टूट जाएगी, then don't do it. Reason, अगर आपको उस इंसान से कोई hint या ऐसे कुछ नहीं मिला है तो, and this person's always been very casual, or maybe ऐसे बहुत बंदे होते हैं, बेस्ट वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मुझे बहुत पसंद है बट मैं उसको प्रपोज कैसे करूँ. उसमें जस्ट सिंपल देखो कि डज शी गिव यू दैट मच वैल्यू. किसी और के बारे में भी सोचती है क्या, या किसी और के बारे में बात करती है क्या. ओ शी हैज क्रश ऑन समवन एल्स आल्सो, देन डोंट, इट्स नॉट वर्थ द रिस्क. But if she never does that and she's giving you all the attention and love, because see, women are very easy to understand. ये बहुत लोगों ने इतना ज़्यादा इसको complicate कर दिया है that women are not easy to understand, but women are. Understand, they come from a space of emotions. Men come from a space of masculinity, which means being a rough, tough guy, being a provider. तो एक बंदा जब समझे कि एक लड़की comes from a space of emotions, then it's easy for you to understand a woman when she's too emotional towards you, too protective about you. All of this, these are signs. आपको लगता है कि डेटिंग एप्स की वजह से कुछ डायनामिक में चेंज हुआ है, सोसाइटल फैब्रिक में चेंज हुआ है, द वे मेन अप्रोच वुमेन, द वे वुमेन अप्रोच मेन, कुछ चेंज हुआ उसकी वजह से बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ यूज ऑफ डेटिंग एप्स एटसेट्रा? Yes, I think हमारी जो डेटिंग स्पेस है वो बहुत डिफरेंट हो गई है. रीज़न बिकॉज पहले डेटिंग यूज टू बी confined to your social circle that you used to be in. जैसे आप कॉलेज में गए तो फ्रेंड्स या आप किसी एक्टिविटीज़ में थे, then you know you used to meet your potential partner, right? But now I think it's become way more easier because supposedly if I as an individual wanted to date someone from a different city altogether, because let's say I like Delhi a lot more and I never want to stay here in Mumbai and I'm a Delhi person, let's say, and यहाँ पे मुझे कोई potential person नहीं मिल रहा, तो dating apps have made it easier to find someone who's much more aligned and who is a part of my non-negotiable. आज के तारीख में अगर आप किसी की bio देखें, I'm like a pre-Tinder, all of this person, but if you see these dating apps and all that, तो उसमें आपको bio में बहुत कुछ मिल जाता है. What the likes are, what do they like doing, what are the non-negotiables, what the person likes doing basically, what their hobbies are. And आपको लगता है कि that's something that's aligned with you, then you can always reach out to this person and connect. So I think dating space has made it all the more easier for us to reach out to a potential partner. बाकी तो ये सारा गेम तो इन पर्सन चीज़ों का है, like in person, no matter आपको कोई इंसान A, B, C, D सारा कुछ आपका मैच करेगा, but what if जब आप किसी को as in person मिलते हैं, so then it's a different game altogether. You have to see how does that person spend his or her
free time, or what are their hobbies, what do they really like doing, or the kind of social circle that they are in. तो ये सारी चीज़ें ना आप उनको जानने के बाद पता चलती है. तो I think dating apps have made it easier, I would say, but also at the same time. To get closer to the right person. Yes, but again, थोड़ा सा tricky भी है. Because of the dating apps, we are constantly having this. There's a term called love benching. So ये love benching आज के तारीख में आपने सुना ही है? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है. I want to know more. So love benching is more like जैसे अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको बाकी कैंडिडेट्स के साथ आपको बेंच पे बिठाया जाता है, राइट? दिस इज अ पोटेंशियल पार्टनर, दिस इज अ पोटेंशियल पार्टनर, दिस इज अ पोटेंशियल पार्टनर, ऐसे. एंड बाद में द पर्सन गेजेस कि अच्छा हु इज मच मोर क्लोजर टू माय अलाइनमेंट, राइट? तो बिकॉज ऑफ दीज डेटिंग एप्स, एग्जैक्टली. तो क्या कैसे हो जाता है कि बिकॉज ऑफ द डेटिंग एप्स यू ऑलवेज फील एज इफ देयर इज अ होल पूल ऑफ डेटिंग पोटेंशियल्स कि अच्छा अगर इसके साथ नहीं जम रहा है तो आई नो आई हैव समवन एल्स. सो यू ऑलवेज हैव दिस वेटिंग गेम इन योर हेड. तो फिर आप डीप नहीं जाते हो रिलेशनशिप. आप डीप नहीं जाते हो. आप डीप जाते भी हो तो भी आपको लगता है कि यू ऑलवेज हैव oh there's a substitute in my head. Grass is greener there also. Yeah. No, there's a substitute in my head. नहीं जम रहा है तो I have someone else also. Like in my head I can try out with. तो somewhere what happens उसका impact क्या होता है दिमाग पे? गलत क्यों है? मतलब गलत क्यों है? मतलब अगर पहले भी जंगल में देखे तो यही था. हाँ. और मेरे पास ऑप्शंस हैं. हाँ. गलत क्यों है? डिपेंडेंसी कम ही हो रहा है. Just wanted. I think गलत इसलिए क्योंकि somewhere you always have this feeling कि आप अपना 100% दोगे ही नहीं इस रिलेशनशिप में, या यू विल नॉट ट्राई एंड टेस्ट बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली हंटिंग फॉर द परफेक्ट और द बेस्ट. विच इज वाई देखो हम अगर इवोल्यूशनरी टाइम्स में जाए तो हमारे ट्राइब्स में भी ऐसे ही होता था. यू यूज्ड टू ट्राई एंड टेस्ट विद लॉट ऑफ वुमेन अराउंड, राइट? दैट्स हाउ द ट्राइब्स वर. बट जब हम इवॉल्व हुए, because during those times our evolutionary period the only job that we had was to have more offsprings. आज वो mindset नहीं है. It's not coming from a space of having offsprings और generation आगे बढ़ानी है. पहले का वो गोल था कि you know what, we have to expand our circle, we have to expand our family. तो 1, 2, 3 सबसे बच्चे करो. तो अभी वो सीन नहीं है. Abhi, I think we are looking for companion and not specifically to do with, I want a mother to my kid or a father to my kid. We're not coming from that space. So this is what differentiates. तो जब आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे potential लोग हैं, options हैं कि अच्छा देख सकता हूँ मैं या देख सकती हूँ इनमें से, तो आप आपका 100% दोगे नहीं, and you'll always hunt for someone who's perfect. But there's nothing called being perfect in a relationship because it's two imperfect people coming together and making it work every single day. That's how relationships are. तो इसमें कैसे हो जाती है? इसमें Goldilocks mentality आ जाती है. You know what Goldilocks mentality is? It's like for Goldilocks, हमने जो कहानी सुनी है, for her, everything sorted pretty well when she went inside the house. Whether it was to do with the porridge, to do with the chair, to do with the bed. उसने ट्राई टेस्ट किया, उसको अपने फिट साइज की चेयर मिल गई, फिटिंग साइज की बेड मिल गई, तो वो उसके लिए इजी हो गया सॉर्ट करने के लिए, समथिंग दैट फिटेड हर, राइट? बट फॉर अस अगर हम हमेशा सोचेंगे तो विल ऑलवेज बी इन दिस गोल्डीलॉक्स मेंटालिटी कि आई वांट टू सीक फॉर परफेक्ट पर्सन. सो ऑलवेज सीकिंग. ऐसा कुछ है कि कोई राइट नंबर है कि इतने ट्रायल करने चाहिए, और maybe is there some mathematical number which people can try? There's none. I think the more you keep trying, if someone who's matching your goals, देखो, easy way to understand that the person is right for you or no is by finding out that you first have to know yourself. आप खुद को जानो कि आपकी खुद की non-negotiables क्या है, कि अच्छा मेरी लाइफ की ये गोल्स है. जैसे मुझे कोई चाहिए someone who's good with his or her mindset, who's constantly working and evolving himself as an individual, who is someone who works out as in physical endurance बढ़ाता है, someone who's in a good shape. For example, if I'm focusing someone who is looking great as like in physique, okay, someone who's who has this
set of priorities sorted in his head, or someone who is committed to me. तो अगर मेरे ये नॉन नेगोशिएबल्स है, एंड अगर मेरा नॉन नेगोशिएबल ये भी है कि यू नो फॉर नेक्स्ट 5 years आई डोंट वांट टू हैव किड्स, लेट्स से, एंड ही आल्सो कम्स फ्रॉम द सेम स्पेस, देन दीज आर योर नॉन नेगोशिएबल्स. अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपके नॉन नेगोशिएबल से मैच कर रहा है, तो देन इट मेक्स सेंस. देन यू डोंट हैव टू कीप हंटिंग फॉर द पर्सन ऑल द टाइम. फिर डिफरेंसेस तो हमेशा रहेंगी, you just have to work it out. So there's a thin line between adjustments and compromise. A lot of people ask, what's adjustment? It's like जब आपको लगता है कि आपकी non negotiables जो होती है वो मैच हो गई है, बट बाकी की जो चीज़ें हैं जो आपकी लिस्ट में है वो adjustment वाली हो सकती है. तो I'll go ahead with this relationship. I can adjust with it. जैसे I love reading book. Okay, I love reading a lot of different things, but my partner does not like it. He's not much of a reader, or तो he's not a nerd in that case. तो मेरे लिए अगर वो adjustable है कि चलो ये trait चलेगी, नहीं है तो भी चलेगी, because there are other important factors जो अच्छी align हो रही है. ये बहुत अच्छा point है आपने बोला. Adjustable और compromise के बीच में what are the kind of factors जो adjustable होने चाहिए और what are the factors जो compromise होने चाहिए? तो they're very subjective and they're extremely tailor-made person to person. Yeah. But there are basic foundations which has to be there in a relationship. जैसे you're supposed to be valued, respected, right? You're supposed to your partner has to respect your boundaries. अगर आपने boundaries रखी हुई है, that boundaries does not mean कि you know what, you're not supposed to talk to me like that. Boundaries means if you speak with me like this, in this tone, or maybe in this tonality, or in that way, or in an abusive tone, I will walk away and I'll not come back. This is boundary. So you set boundaries. तो कोई इंसान आपकी boundaries respect करता है. For example, जब मैं काम कर रही हूँ, तो I don't want to be disturbed during this to this time. These are my boundaries. I've set boundaries and I've spoken. So if your partner does not respect your boundaries, it won't make sense. So I think being valued, being respected, being acknowledged, feeling heard and seen in a relationship, being desired by your partner, and most importantly, respecting your boundaries, these are the non-negotiables. But उसके अलावा हर एक इंसान की, जैसे आपने बताया ना, for example, you were saying कि वर्कआउट करते हैं या करियर ओरिएंटेड और नॉट, तो आपके एक्सपीरियंस में जो आप बहुत सारे लोगों को देखती होंगी, तो वो बकेट्स, और जैसे आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया ये रीडिंग का, you know, it could be an adjustable, not a typically a non-compromising factor नहीं हो जाता. तो जो compromising factor और जो adjustable worldly traits में, जैसे करियर पकड़ो, फिटनेस ओरिएंटेशन पकड़ो, पेरेंट्स के बारे में काफ़ी चीज़ें हो जाती है, तो वो सब चीज़ें पकड़े, तो आपके हिसाब से वो बकेट में कौन सी चीज़ें आती है which you're seeing more, not which you think, but what you're seeing more people doing having non-compromise on, and this bucket of adjustable on, where are people adjusting, where are people not compromising? I think people are not willing to compromise in terms of their self-respect, in terms of respect, which means if you're disrespecting me, abusing my mental health, my me as a person, as an individual, if you are not respectful towards me, आज की generation knows that I need to be valued as a person. देखो पहले के ज़माने में you didn't have a choice. Of course आपकी शादी कराई जा रही थी. Now if that person is abusive, not abusive, वो आगे की बात. You have to adjust, and let's suppose कि अगर इस चक्कर में बच्चे हो गए, तो then you have to, we've seen our forefathers and ancestors compromising in a relationship despite not having a matching non-negotiables, right? तो आज की तारीख में I have seen most of this generation, they focus a lot more in terms of their career, that oh, you have to respect my career. For example, there are a lot of people who don't want to have a career also. They want to be just homemakers. I'm not being gender biased here. It could be anyone. If there's a guy who is not way career oriented, says कि अच्छा ये 9 to 5 job करनी है, I'm good with it, basic job है, चल रही है, अच्छी है. तो they want to be respected for the choice of career that they make. They want to be valued and respected for their boundaries that they set. They want to be respected for giving importance to their respective families, right? पहले क्या होता था कि जो लड़की की फैमिली होती थी उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा था, वेटेज नहीं था. But I think today women are coming out and speaking about this, that listen, my family is of an equal value, if not any less. तो
तो ये सारी चीज़ें I think they're very much seen in today's generation, and these are some of the buckets that people want their partner to tick off. तो बाकी अगर if your partner, अगर आपको लगता है कि oh I want my partner to be my gym partner or my sports partner and this is one of your non-negotiable, so that's what I'm saying, it's tailor-made. It's tailor-made to everyone. Every person. आपकी हर एक इंसान की गोल अलग है. तो बट ब्रॉडली आपने बता दिया, तो दैट इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज आप काफी लोगों को देखती होंगी और यू मस्ट बी गेटिंग अ सेंस, एंड आई एम आल्सो जस्ट क्यूरियस कि जो लोग आपके साथ काम करते हैं वो ऑल ओवर इंडिया होते हैं? Yes, it's pan India, of course, and there are people from different places as well, right? Like places in terms of they are from different countries as well. So I think I've been seeing a lot of different varieties of people and whatnot. From an Indian context, only Indian, how do you define early phase, mid phase and late phase of relationship? और हर एक phase का green flag, red flag क्या होता है? तो I think green flag is just what we mentioned. It's about knowing where you stand, where the person knows where you stand in that person's life, which means you have a clarity whether this person wants to commit or not commit. Let's say you come from a space जहाँ पे you're just looking for a fling, right? You're not looking for a commitment. Then if you see that the other person comes from the same space, it's a green flag for you. See, again, green flag, red flag, that's completely subjective, क्योंकि अगर मैं उसमें से हूँ जहाँ पे if I'm getting in a relationship with someone and if I'm coming in a relationship only from a pure perspective of wanting to be committed to this person, then if the person is not willing to commit to me, I'll see that as a red flag. But if I'm coming from a space जहाँ पे I'm just looking for a fling, then even the other person wants like a casual dating scene, then it's not a red flag for me, right? So red flag, green flag completely depends, but like I said, few things: physical, mental, emotional, financial abuse of any kind is a red flag. It could be even red flag सिर्फ यही नहीं होता कि ओ आपका पार्टनर आपका फोन चेक कर रहा है. I mean, it's basically intruding your private space. But it could be also about wanting to know, okay, how much bank balance do you have? अच्छा, लोग ये सब भी पूछते हैं? पूछते हैं, of course पूछते हैं. क्या अच्छा बैंक बैलेंस कितनी बताओ? तो intruding your financial space also. These things are a little tricky, right? This is a red flag. Let's say if I come from a space जहाँ पे I love to be vocal about my finances and my investments and all of this with my partner, then I won't see this as a red flag. But if my partner is constantly asking me, अच्छा बताओ कहाँ पैसा डाला, क्या किया, ये किया, तो you're not respected and valued. You're not trusted enough. So, what are the kinds of mental abuse? See, mental abuse could be in a form of manipulation, which means if I know that my partner will give me time only if I do XYZ thing. For example, if my partner is not in the right headspace right now, didn't have a good day, let's say, आज अच्छा दिन नहीं गया, and now I can kind of tame him to do something. That's manipulation. So these are mental abuse. Ghosting is a mental abuse, right? Then Ghosting यानी कि कितने मतलब घंटों के लिए not available? Not available, not communicating. Stonewalling is also. मैंने सुना ये term hot and cold भी. Yes. It's like ghosting? So hot and cold is not like ghosting. Basically, hot and cold could be a part of, it's basically a byproduct of stonewalling. It could be a part of something called love bombing. मतलब आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो and suddenly you withdraw your love. But when you see that the person is just moving away, तो वो cold you again बहुत सारा प्यार दे दो just to attract that person and keep that person close to you. तो ये सारे manipulation techniques are actually mentally abusive in nature. People don't realize. Stonewalling, love bombing. हाँ, stonewalling है, love bombing है. Stonewalling आप समझा रही थी. So stonewalling is basically giving silent treatment. So if you did something and I did not like it, let me not talk to you. Let me just move away and just use a lot of, I build walls around me कि मुझे बात ही नहीं करनी. That's stonewalling. In fact, it's said that stonewalling is one of the contributor that predicts divorces and breakups in future. So if you're constantly stonewalling your partner, which means you're not open for communication. And I really want to address this. One of the reasons a lot of people today
डू स्टोन वॉल बिकॉज देव सीन. देखो हमारे ने बहुत सारे बिहेवियर्स हमारे पास से भी आते हैं. पास मतलब पास रिलेशनशिप से नहीं. इफ वी सीन आवर पेरेंट्स ऑल्सो डूइंग दैट, तो वी ट्राई एंड अडेप्ट दीज थिंग्स बिकॉज आवर पेरेंट्स आर आवर रोल मॉडल्स. तो अगर मैंने देखा है कि माई पेरेंट्स whenever they have an argument, they stonewall each other, they don't talk, they just go on a cold war, and after a while they come back again, normal conversation, this that. तब भी उनकी 50 साल से रिलेशनशिप अच्छी ही चल रही है. तो आई अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप तो ऐसे ही चलाई जाती है, इनकी तो चल ही रही है. नाउ यू डोंट नो वेदर कितनी मेंटली अब्यूजिव है, राइट? तो जस्ट बिकॉज कोई चीज लंबी चल गई डजंट मीन दैट इट्स हेल्दी इन नेचर. मे बी दैट्स जस्ट द कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन their non-negotiables, compromising on what they want. Non-negotiable पे compromise किया तो उन पे impact क्या होता है? तो impact यही हो जाता है कि आप सिर्फ अपनी emotions को अभी at this point आप अपने non-negotiables को अच्छा आप compromise करके चल रहे हो, but at one point तो क्या compromise हो जाता है? तो compromise आपकी खुद की image compromise हो जाती है, where you, so I'll tell you, it goes to an extent where you start hating yourself. कि मैं तो ये डिजर्व नहीं करती बट फिर भी मैं ये चीज़ कर रही हूँ. क्यों? आई हेट माई सेल्फ. आई हेट माई सेल्फ फॉर पुटिंग माई सेल्फ थ्रू ऑल ऑफ दिस थिंग. तो यू स्टार्ट हैविंग सो मच ऑफ सेल्फ हेट्रेड. दिस इज वन ऑफ द थिंग. सो यू एक्चुअली डैमेजिंग योर मेंटल पीस क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज तो कर रहे हो. एंड सडनली व्हेन यू स्टार्ट सीइंग पीपल अराउंड यू हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, देखो लेट्स बी ऑनेस्ट, वी कंपेयर आवर रिलेशनशिप्स विद अदर्स, वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स ऑल द टाइम. तो जब मुझे लगता है सी अगेन हम सिर्फ बाहर की चीजें देखते हैं लोगों की, राइट? वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग इनसाइड इन रिलेशनशिप. अब दोस्त जो ये दो हमारे जो फ्रेंड कपल है, दे आर वेरी गुड व्हेन वी आर आउट, बट यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन देम. तो हम ऑनेस्टली कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा you know my relationship is so bad right now, my partner doesn't even value my boundaries or respect my boundaries, or he always doubts me or asks me questions which are little triggering in nature, right? तो I don't see my friends doing this with each other. तो वो थोड़ा सा ये जब आप देखना शुरू करते हैं ना कि अच्छा मैं तो कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, and then you start hating yourself, then there's a lot of hatred in a relationship, then you start withdrawing, a lot of stonewalling हो जाता है. yes, then वो stonewalling हो जाता है. उसके अलावा you start using a lot of contempt in relationship. You do this, you're always like that, this relationship is shit and what not. So then there's a lot of fight. So जो debate थी वो धीरे धीरे fight में convert होती है, and that's how you actually start separating also. जब आपने तो we don't realize, but अगर आपने आपके नॉन नेगोशिएबल्स पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया है तो आप वो रिलेशनशिप के साथ साथ खुद को भी हेट करना शुरू करते हो. सो मच सो कि आगे जाके इवन इफ यू फाइंड समवन हु इज अ पोटेंशियल पार्टनर, यू विल नॉट गेट इनटू अ रिलेशनशिप. सो गोइंग फ्रॉम आई डोंट वांट टू डेट एनीवन टू आई हेट एवरीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड. लॉन्ग रन में स्टोन वॉलिंग बेटर है या फाइटिंग बेटर है? I think I wouldn't say fighting. Fighting is not the term, but communicating better है, which means it's always better to communicate with your partner कि आपको क्या affect कर रही है. But you know what? The funny part is, it's 70% of your tonality, and the rest is what you speak. So how you speak really matters. तो अगर आप कोई चीज़ बोल भी रहे हो, instead of saying you always do this, you always come late, you always do blah blah blah, just say that you know what, when you do this, I really like it. आप टेबल को टर्न करके बताओ. जैसे कि जब तुम बैठ के मेरी बात सुनते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, I feel really valued. So what happens? The other person understands that, oh, you feel valued by these things. अब कैसे होता है, आपने फुटबॉल की गेम तो देखी होगी. तो जब बॉल आता है तो the defender's job is to defend the ball, right? He has to defend the ball. तो because he sees that ball as an attack. तो अगर मैं कोई चीज़ बोलूँ contempt use करके कि you do this, it feels like an attack. So instead of having an open mindset to understand that, I simply start defending myself and then build walls. Saying कि ये हमेशा मुझे उंगली करती है. एक positive manipulation की तरह नहीं हो गया in a way? नहीं, positive manipulation नहीं. It's like you learn to communicate better. आप बोलते हो कि देखो हम पॉजिटिव मैनिपुलेशन बोलते हैं, बट दिस इज एक्चुअली क्लियर कम्युनिकेशन कि अच्छा यू नो व्हाट, इंस्टेड ऑफ सेइंग यूजिंग यू, यूज द स्टेटमेंट आई.
I like this. I like it when you get me flowers. Oh, you remember you did this? I loved it. We had such a good time. तो आप क्या कर रहे हो? आप positive instances पे focus कर रहे हो. So, as per one of the relationship theory, it says always have an equation. Basically, there's a ratio for a good relationship, and that ratio has to be 3:2. Which means कि अगर 2 बार आपके झगड़े हुए या you didn't have like a negative conversation, तो 3 बार have a positive one. So you see कि आपका glass is full, more full compared to how empty it is. तो आप क्या कर रहे हो? बार बार उसको fill करने की कोशिश करते हो. तो it's always, and आप जितना भी fill करने की कोशिश करोगे, at one point it's going to flourish only ना. तो आप अच्छा ही कर रहे हो. तो this is not positive manipulation. It's just that you're trying to better your relationship together as a team. एक इंसान को नहीं करना, दोनों को करना है. Like that. ये सब सुन के लग रहा है बहुत एफर्ट है. मतलब जैसे मैं मम्मी से बात करता हूँ या आप लोग करते होगे, बहुत डायरेक्ट रहता है, नहीं चाहिए. इज अ कंफर्ट इन बीइंग डायरेक्ट. लॉन्ग रन में अगर मैं पार्टनर के साथ हूँ और हर टाइम मैं ऐसे सोचूं इतना कि उसको क्या फील हो रहा है, स्टोन वॉलिंग नहीं करना है, मतलब समवेयर I don't quote me, but somewhere borderline toxicity is comfort. ठीक है. Somewhere it feels कि ठीक है. But again, I think you have the answer in your question. You said borderline toxicity. That's actually toxicity because आपको लगता है see comfort क्या होता है पता है? आपको ज़्यादा effort नहीं डालना. Relationship is an effort. ये आप अभी देख रहे हो especially in let's say 2 years, 3 years, you'll feel like कि अच्छा this is easy, still थोड़ा बहुत है. बट जब आप किसी के साथ 10 साल 15 साल रहते हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेल अलाइंड विद दिस पर्सन, विच ऑल्सो मीन्स कि ये डेली का एफर्ट है. जैसे आप सुबह उठते हो तो आप रोज सुबह मेडिटेट करते हो ना, आप रोज सुबह आप नहाते हो, यू डू ऑल योर बेसिक हाइजीन, योर बेसिक डेली चोर टू मेंटेन योर सेल्फ, राइट, एज एन इंडिविजुअल. तो आपको जब वो टॉक्सिक नहीं लगता या एफर्ट नहीं लगता, तो एक नॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन करना क्यों टॉक्सिक लगता है या क्यों एफर्ट लगता है? shouldn't be like that. I understand that it should come from a space of easy going way. ठीक है, instead of saying, but एक बार जब आप एक gradual communication ला देते हो ना, जब आप एक तरीके से एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हो, तो it becomes easy. For example, कल को मुझे सोचना नहीं पड़ेगा. I know if I'm way more aligned with this partner of mine, I'll be able to communicate saying कि you know what, I was irked because you did this, or maybe I was irked by the fact that you know when you mentioned this thing, तो मुझे वो थोड़ा सा I felt थोड़ा snarky during that time. तो वो सामने वाला अटैक जैसे नहीं लेगा. So you have to develop that resilience, that emotional intelligence to understand each other, and which is why I said कि ये एक का काम नहीं है, दोनों का काम है. To work in alignment with each other, which means कि अगर आपको लगता है कि एफर्ट तो उसके लिए भी तो होगा ही ना, उसको भी लगेगा कि I have to think before speaking. You don't have to think. It's just that you have to build that relation ताकि आपको कल को आप कुछ बोल भी रहे हो तो it should feel comfortable. You have to reach that level. It's that. So it's not borderline toxicity to kind of comfort, इसको आपका new comfort बनाना जरूरी है, and which is what even neuroplasticity is about, that you're evolving, so you can always build new neural pathways, you can always build new form of behavior, you can always build new form of being with each other. So this has to be a new normal. जैसे कोविड के टाइम पे we were working from home, that was a new normal, right? हम बहुत complacent हो गए थे by working from home. तो वैसे ही you have to become complacent by having that equation with each other, ताकि कल को आप कुछ बोलो तो वो बुरा नहीं लगना चाहिए. It should come from a space ताकि आपका पार्टनर भी समझे कि maybe I've triggered him and I should know what triggers him and vice versa. हाँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि बिटवीन कपल्स व्हेन दे डोंट कम्युनिकेट, अंदर ही कुछ रिजेंटमेंट स्टार्ट हो जाता है, बिल्डअप होना, और वो रिजेंटमेंट की वजह से फिर स्टोन वॉलिंग शुरू हो जाता है, और वो स्टोन वॉलिंग की वजह से देन दैट्स व्हाई यू सेड स्टोन वॉलिंग इज अ बिग इंडिकेटर ऑफ अ सेपरेशन, बिकॉज दैट मीन्स आप एक ऐसे सिचुएशन पे आ गए हो कि आप कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते हो. And then you'll start gradually also, I'm sorry to cut you, but that there's something I want to add,
कि ऐसे ही gradually you start falling for others who will make you feel heard and seen, who will understand आपकी value, जो आपकी value समझेगा. And फिर क्या हो जाता है, which is why a lot of these extramarital relationships also take place. Because in my marriage, if I did not feel seen or heard or valued or respected or acknowledged, or maybe मेरे boundaries को respect नहीं किया गया है, I have someone who does that for me at this point. So you understand? तो क्योंकि मैंने मेरे relationship में communicate नहीं किया, जब start से क्या होता है कि आप धीरे धीरे pile up हो रहा है आपका. Day 1, Day 2, pile up. आप पहले communicate कर दो तो आपको तो वो pile up नहीं होगा ना. So at one point you're not erupting like a volcano. It's like a आप जैसे trigger आ रहा है आप address कर रहे हो उसको. बात करते रहो. हाँ, address करो, resolve करो. Most importantly, what I see, like one of the tough time with couples that I usually see, कि usually blame और contempt बहुत ज़्यादा होता है कि oh you did this, you did this, you did this. Be solution focused, not problem oriented. Solution पे focus करो. ठीक है, मुझे आपकी behavior अच्छी नहीं लगी, आपको मेरी ये behavior अच्छी नहीं लगी. Let us just come to a midpoint. Let's just walk to a midpoint such that we can create more win-win situation for both of us. That's how relationships have to be. यहाँ पे मेजर चीज़ ये है कि पाइल अप हो रहा है. इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि पाइल अप हो क्यों रहा है, लोग बोल क्यों नहीं रहे, उसी टाइम पे वो क्लियर क्यों नहीं हो रहा है. Because of fear of rejection. Fear of rejection. Because they feel that, oh, I'll be rejected. Or maybe I will not be loved by the person if I pinpoint something about him. तो अगर मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कहूँगी, also मुझे लगता है कि मेरा partner is not open enough to listen to his flaws, or maybe I wouldn't say flaws, but listen to something that triggered me. If my partner is not open, तो मैं वो बोलना बंद कर दूँगी. You also fear कि एक sometimes what you're addressing may come in your non-compromise list. Yeah. So then you're touching upon that and then you'll be stuck. That could also be a situation. काफ़ी कॉन्टेक्स्ट है इस पूरे कॉन्वर्जेशन में. ठीक है, मान लो एक फियर है, उसके ऊपर से आप बोल रहे हो कि मुझे एक अच्छे से वेल मेंटेन तरीके से पोजीशन करना है जो मुझे बोलना है. ऊपर से देयर इज अ लेयर कि मेरे नॉन नेगोशिएबल में भी है. बट देखो, वेल मेंटेन तरीका नहीं होता ये आपका. एक्चुअली कैसा है कि हम जया किशोरी जी ने ना बहुत प्यारा सा एक मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी जहाँ पे शी मेंशन इट टू द ऑडियंस सेइंग दैट लोग कहते हैं अगर घर वालों के साथ सोच के बात करना है तो क्या ही मतलब, घर वालों के साथ ही सोच के बात करना है, क्योंकि बाहर वाले आएंगे, एक दो इंस्टेंसेस उनके साथ होंगी बट दे विल मूव अवे. बट आपको अगर किसी के साथ रहना है तो दे आर योर लव्ड वंस, दे आर योर फैमिली, दे आर द क्लोज्ड वंस, तो उन्हीं के साथ सोच के बात करना है आपको. मुझे यही समझ नहीं आ रहा है अभी. मैं बाहर हूँ, अभी ऑफिस में हूँ, मैं सोच के बात करता हूँ. वो कंफर्ट टॉक्सिसिटी जो बोल रहा था यहीं पे हो. घर में इट्स माई कंफर्ट स्पेस. आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड क्रिएट न्यूसेंस. मतलब गिवन बाउंड्रीज एक वो कंफर्ट होना चाहिए ना कि ये मैं सोच रहा हूँ टक बोल दिया. जैसे मम्मी ने कुछ खाना बनाया, मम्मी अच्छा बनाती है रेगुलरली, एक दिन नहीं बना तो आज नहीं बना अच्छा, ठीक है, अभी इसको मैं शुगर कोट करूँ, हर दिन अच्छा बनता है. सैंडविच फीडबैक कि ये रोटी अच्छा है, सब्जी में दाल कम है, आई डोंट नो. बट आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, बिकॉज ये अगर हम वो नॉन नेगोशिएबल लिस्ट और एडजस्टमेंट लिस्ट में लेके आए तो मे बी फूड इज़ अ एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर यू. और नॉन नेगोशिएबल, और जब भी पार्टनरशिप होती है तो तभी एक नॉन नेगोशिएबल लिस्ट होता है. यू डोंट वांट टू, अगर वो नॉन नेगोशिएबल लिस्ट में आपकी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं हो रही है तो आपको डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करने इतने नहीं पड़ेंगे, और एडजस्टमेंट से बात करके फिर आपकी रिलेशनशिप एक हार्मोनियस रिलेशनशिप भी हो सकती है. हमेशा क्रॉस हो. बट आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन दैट यू मेंशनड कि सपोजली आज खाना अच्छा नहीं बना, लेट्स से. अब मैं अगर मम्मी है तो मैं बोल दूंगा, बट लेट्स से इफ माय पार्टनर, इट्स माय पार्टनर जिसने बनाया, अब मैं हेजिटेट कर रहा हूँ कि मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ. और मज़ा भी आता है टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब कभी वो जो मसाला है इक्वेशन में वो आता है. मतलब so I'll tell you how do you put things through. Let's say अगर आपको कोई चीज़ बोलनी भी है तो there is a psychology trick. I'm saying it's not a trick but it's a psychological way of saying something.
तो पहले पिन पॉइंट समथिंग विच इज़ गुड अबाउट द पर्सन, देन से कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आज लेट्स से चने की सब्जी बनी है, ठीक है, अब आपने वो ज़्यादा इतनी खास नहीं बनी एंड यू आर लाइक कि अब मैं बताऊँ कैसे, तो आप बताओ कि अरे उस दिन वो भाजी बनाई थी, बहुत बहुत सही थी, मज़ा आ गया, इसमें भी ऐसा कुछ मसाला डालो ना तो ये भी और मज़ेदार बन जाएगी. यू सी देयर इज़ अ वे. इसमें आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला. इट्स जस्ट दैट यू आर ट्राइंग टू मेक दिस एज योर न्यू नॉर्मल way of communicating with the person. That's the only thing. आप just आपका तरीका चेंज कर रहे हो बात करने का. आप इसको शुगर कोट करके नहीं बोल रहे हो, आप सिर्फ बता रहे हो कि वो अच्छी लगी. There's a way ताकि सामने वाले को लगे कि ओ वो भी अच्छी लगी थी उसको, तो आई थिंक आई कैन ट्राई एंड ट्विस्ट. लेट्स सी. हमेशा तो अच्छा बोलते हैं. अगेन अगर आपके रिलेशनशिप में इक्वेशन अगर वो रेशियो 3:2 का है तो वो 2 ज़्यादा इतना अफेक्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि for 2 negative conversations you've somewhere you've balanced it out with 3 positive conversations. So a person will latch on to those 3. Again it's very tricky क्योंकि हमारा जो negativity bias है हमारे head में, it makes us focus on the negative part a lot more. But it matters the most, again going back to our conversation, that how do you speak matters the most and what do you speak. तो your tonality matters. प्यार से कोई चीज़ बताओ, समझाओ, नॉर्मल. तो ये आप ऑफिस में करते हो. क्यों? बिकॉज यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ योर एम्प्लॉयज. घर पे क्यों नहीं करते? क्योंकि देव बीन टेकन ग्रांटेड. देव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड. एज सिंपल एज दैट. जैसे अपने मम्मी को बोल दिया, बट मम्मी को कोई चीज़ बुरी लगी होगी, बट वो शील नॉट कम आउट एंड स्पीक टू यू अबाउट इट. नहीं, मेरे सोशल कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी अलग है. मुझे नहीं चाहिए इतना शुगर कोट मिले. शायद इट्स अ वेरी कल्चरल थिंग. ठीक है, इसलिए मे बी क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, डायरेक्टर हो, क्योंकि इट सेव्स टाइम, कंफर्ट है. दिस इज़ माई गिफ्ट. यू डोंट हैव टू पुट एफर्ट टू बी विद मी. शायद इसलिए आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज नॉट एफर्ट, दिस इज जस्ट यू ट्राइंग टू ब्रिंग अ बेटर इक्वेशन. लाइक आई सेड, आप 3:2 का रेशियो रखोगे ना, तो इवन इफ you're just behaving out of your comfort, वो बुरा ही नहीं लगेगा इंसान को. That's it. And it's just an आप देखो, अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो आप ट्राई करोगे ना टू क्रिएट मोर नॉवेल्टी विद दिस पर्सन, टू क्रिएट मोर गुड टाइम्स विद दिस पर्सन. क्या आप इस इंसान को मिलते हो ये सोचे आज मुझे इसके साथ झगड़ा करना है? नो, you never meet someone from that headspace, right? You always meet that person. Let's say आप अगर डिनर के लिए जा रहे हो तो you always meet that person from a headspace की oh you know what we're going to have nice dinner today, we'll chit chat, do this that what not. आप अच्छी चीजें इमेजिन करते हो, that's by default. नेगेटिव चीजें हो जाती है कभी बात करते करते, कोई चीजें when there's a clash of opinions, right? तो during these times you never meet someone or be with someone from a space of मुझे इसके साथ आज लड़ाई करनी है. No one wakes up from that headspace also. Even someone, let's say, अगर कोई juvenile भी है, right, who's done something wrong legally, तो वो बचपन से गलत करना उसने शुरू नहीं किया, उसने मजबूरी से गलती करना शुरू की, या मे बी आजू बाजू में देख करके उस चीज़ को अडेप्ट किया, that this is how life has to be lived, and that's how the person has adapted that behavior. And we are constantly learning from our circumstances and surroundings, so we keep learning. So you never come from that space. It's always from a space of, from a good space. Yeah. So it's that. मुझे I want to go back जो आपने stone walling की बात की कि stone walling आप इतना ज़्यादा stone walling करोगे कि you don't feel seen and heard, फिर आप बाहर देखने लगते हो. Okay, now you know that's one thing. But when you're entering a new relationship, you know, that time sometimes often you come with suddenly rose-tinted glasses, baggage also, but also कि हाँ this is so much better. Something else that I have is so much better. वो क्यों हो जाता है? And how can we protect ourselves against that? So there are stages of relationships, okay? When you meet someone, you are in an infatuation stage. जहाँ पे किसी को मिले, you like the person by default. You're wearing those rose-tinted glasses and you like everything about this person. Even their flaws. You overlook the flaws. क्योंकि ये हमारी brain की wiring है कि हम सिर्फ positive पे focus करते हैं. Why? Because there's this surge of oxytocin that's been released in our body. There's high dopamine in us right now. You know, it's a feel-good factor to have someone, to have a companion, all of this.
तो आप बाय डिफॉल्ट ये एक ब्रेन की वायरिंग होती है जहाँ पे डजंट फोकस ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट अनलेस एंड अनटिल दैट यू मेट समवन फ्रॉम अ प्योर पर्पस ऑफ मुझे इससे शादी करनी, लेट मी सी एंड आई एम स्ट्रेट कट राइट नाउ कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कैसे रहता है, क्या आई मीन हाउ द पर्सन्स बिहेवियर इज, उसकी करियर कैसी है, फाइनेंस कैसे मैनेज करता है, ऑल दैट ब्ला 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 ब्ला, मेंटल हेल्थ कैसे देखता है, डज ही रिस्पेक्ट पीपल अराउंड हिम, मैं ये सारी चीजें देखूंगी इफ आई कम फ्रॉम दैट हेड स्पेस, राइट. बट अगर आप जनरली मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन गेट्स इनटू अ रिलेशनशिप फ्रॉम अ हेड स्पेस की नाइस कंपेनियन, यू नो, गुड फीलिंग, तो आप रोज टिंटेड ग्लास तो आपने तभी पहन लिए. एंड फर्स्ट इज बिकॉज इट्स एन इन्फैचुएशन स्टेज. Then comes where you start seeing the reality behind it, which means you remove the glasses and you start seeing कि अच्छा ये चीज़ें थोड़ी जम नहीं रही है, ये चीज़ें is completely off. That's actually the stage where your honeymoon phase has worn off. आपकी हनीमून फेज चली गई है, आपकी जो फेज है वो रियलिटी फेज है, जहाँ पे आप आपकी नॉन नेगोशिएबल्स देख रहे हो, आप उस इंसान की आदतों को, उनकी डेली लाइफस्टाइल को, उनके गोल्स को समझ रहे हो. When all of this happens, अब इसमें अगर then comes the third stage where there is a stage of struggle कि आपकी ये बहुत सारी चीजें aligned नहीं है, तो क्योंकि aligned नहीं है तो this is the stage where it's either make it or break it. So you will either make it through the relationship if you really value this person values you, and अगर उनको लगता है कि this can be a great equation, like a relationship, a great partnership and companionship, तो you both will work together as a team unanimously. But अगर supposedly वो चीज़ नहीं हो रही है, आपको लगता है कि differences बहुत ज़्यादा है, जब आपको लगता है कि आपकी non-negotiables match नहीं कर रही है, जब आपकी compromising factors में बहुत सारी चीज़ें compared to the adjustment factors, right? तब आप you break it. You realize कि, say for example, if मेरा non-negotiable is कि I am looking for a committed relationship, but this person doesn't want commitment. He says, let's go with the flow, we'll see what happens. And this go with the flow is the biggest scam of the world. The biggest scam. Because go with the flow scam इसीलिए है क्योंकि if you come from a space जहाँ पे you really like this person, this other person says कि let's go with the flow and see what happens tomorrow. In the entire process, you will get more deeply involved with this person, and वो इंसान वहाँ का वहाँ ही धरा रह जाएगा. तो what happens? You just made a fool out of yourself. So never, if you come from a headspace की मुझे commitment चाहिए, this other person says we'll see what happens. Don't fall for that scam. तो आपको ये third stage पे, struggle के stage पे आपको पता चल जाता है कि you know either this is a make it or a break it situation, where you both can work together as a team or not. अगर यहाँ पे ये stage पे आपने सही से handle कर लिया, then you move forward and you come to a stage of a repairing stage, and where you come to a stage of a maintenance stage, which means now you work together as a team to maintain that relationship. तो I am not saying कि आप ये stage पे आ गए, fourth stage पे, तो it's going to be happily ever after. It's never going to be like that. You don't wake up and you say, oh, it's happily ever after. Anything can trigger you. It's maintain ever after. Yes. Actually, I think we should change the slogan now. It's maintain ever after. तो nice. एक personal question है ना, हमारे friend circle में asking for a friend. बहुत बार क्या होता है, friend circle में आपके एक friend एक relationship में जाने वाले होते हैं और पूरा friend circle देख के बोलते हैं नहीं गलत. तो वो सिचुएशन में उस फ्रेंड को क्या करना चाहिए? So बहुत सारी theories है, and there were surveys that were being done. Studies बताती है कि usually when you get into a relationship with someone, or maybe you're looking for a potential partner and शायद आपको ये इंसान पसंद आया है, sometimes when you really like this person, like I said, you're wearing rose tinted glasses because you like this person because of three main traits in this person. Either this person is extremely attractive, or this person has a great career, or this person is a great sports person, if that's one of your likable thing. तो checklist. your checklist. तो majorly 3 चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से you like the person. अब जैसे for example,
आपने रोज टिंटेड पहना हुआ है, आपकी शायद सारी चीजें मैच कर भी नहीं रही है, आपने आपके दोस्तों को कहा कि मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे ABCD मैच होना ही चाहिए, आई वॉन्ट दिस पर्सन, आइदर दिस पर्सन, से फॉर एग्जाम्पल इफ आई लिव इन द US, तो आई एम लुकिंग फॉर अ पोटेंशियल पार्टनर जो US में ही रहती हो, जो करियर ओरिएंटेड हो, खुद भी जॉब पे हो, एंड इज लेट्स से फॉर एग्जांपल इज फ्रॉम द सेम फील्ड एज आई एम, तो ये मेरी नॉन नेगोशिएबल है, विच मीन्स कि जब तक मुझे ये इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरी नॉन नेगोशिएबल लिस्ट को, चेक लिस्ट को टिक ऑफ नहीं करे, आई विल नॉट गेट इनटू अ रिलेशनशिप. नाउ इन दिस एंटायर प्रोसेस आई सडनली मीट समवन who did not tick off some of my checklist. हाँ, अभी at this point because you really like this person, तो आप तो उतावले हो रहे हो to be in a relationship with this person. Now this friend, the circle of friends, sometimes they see the red flags before you. They see कि अच्छा ये सारी चीजें शायद आगे जाके problems ला सकती है, so don't get into it. So it's usually said as per survey कि you should always check with your friends and family also, especially your family as well. Always make your potential partner meet your family, okay, or meet your friend circle and see, not just once, a few times, see how are they in the social settings, because your friends are able to gauge well. More than friends, again I'm saying हर friends, सब friends का ऐसे नहीं होता, because yeah, no, but I'm saying even close ones, see everyone comes from their own agenda, right? अगर आपकी फ्रेंड को लगता है कि ओ यार तेरी गर्लफ्रेंड तो 10 बजे सो जाती है, पार्टी नहीं करती, और हम तो पार्टी एनिमल है, अब क्या करें, तो ये जमेगा नहीं ऐसे, तो आई थिंक बट वो उनका एजेंडा है, वो आपका एजेंडा नहीं है. रीजनेबल रीजंस. so I'll tell you what, everyone behaves or works as per their flexible morality. Isn't that true? हर एक इंसान goes ahead and works to as per their flexible morality. अगर supposedly मैं डॉक्टर हूँ and if I'm smoking and I think smoking is fine, right? तो चाहे वो डैमेज करता हो, तो I know that smoking is injurious to health, but if I'm a doctor, I'm still smoking. तो अगर मुझे कोई इंसान दिख जाए और वो स्मोक कर रहा है, तो मैं कहूँगा अरे ठीक है, कोई बात नहीं है, कभी कभार चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो everyone actually acts as per their flexible morality, क्योंकि मुझे लगता है वो सही है, तो that's fine. So even your friends might come from their own flexible morality. They might suggest you as per their agendas, कि मेरे हिसाब से यार तेरी पार्टनर तो ज्यादा कम्युनिकेट भी नहीं करती, इतना लंबा लंबा टाइम, आई मीन शी इज ऑफ कम्युनिकेशन फॉर 6 hours 5 hours, दैट शुडंट बी द केस. यार कॉन्स्टेंटली शी शुड बी अपडेटिंग यू, और यू शुड बी अपडेटिंग हर अबाउट योर वेयर अबाउट्स, व्हाट आर यू डूइंग इन द डे एंड व्हाट नॉट. अगर कई बार क्या हो जाता है कि अगर आप और आपकी पार्टनर ऐसे कम्युनिकेशन टाइप से ठीक हो, sometimes your friends can actually nudge you saying ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता. So you have to be wary of whether your friends have a specific agenda, and based on that they're giving you suggestions. But it's good to have opinion of your friends, your close ones, especially your family, because they see how you are as an individual, especially your family. They know you well. And sometimes they can figure out that whether this person is going to be like a best aligned person or not. अगर आपकी फैमिली ने बोला कि लेट्स से आपकी फैमिली रिलेशनशिप हेल्दी है और आपके रिलेशंस अच्छे हैं, आप किसी को पसंद करते हो, लेकिन आपकी फैमिली ने बोला कि ये भाई ये तेरे लिए ठीक नहीं है, तो व्हाट शुड आई डू? अगेन अगर आपकी फैमिली इक्वेशन बहुत अच्छी है, which also means that they are open and vocal about how they see the whole thing, correct? Which means you should listen to the person and ask them, communicate instead of defending. Ask what do you think, जो ये चीज़ कौन सी चीज़ नहीं चलेगी, what do you think about it? फिर जब आप बात करते हो वो कहेंगे कि यार पर वो तो अपने में रहती है, ज़्यादा बात नहीं करती है, and she doesn't even read, or she's not a nerd, she's a very homemaker person. But आपके लिए अगर वो okay है, then you're not supposed to listen to someone. बट आप फैमिली को एक्सप्लेन करोगे फिर? हाँ, तो बात करोगे. मतलब कितना डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस इज गुड, और कब ऐसे कट नहीं हो रहा, फैमिली मना कर रही है, आई हैव अ वेरी गुड इक्वेशन विद फैमिली, दे आर स्मार्टर देन मी. No, that shouldn't be the case. Your family should not have the decision making I think option.
they are not the one who are supposed to make decisions on behalf of you. They're supposed to suggest you, advise you, but not make decisions on your behalf. That's a fact. No matter how great of an equation you have with your family, but they shouldn't be leading you कि you know what, मत करो इसके साथ करो. Shouldn't be the case. Reason I'll tell you. तरीका जैसे आपने कहा कि आपको बात करनी चाहिए, of course आपको फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए. दैट आई थिंक आप जो चीज़ें पिन पॉइंट कर रहे हो दे आर एडजस्टेबल, दे आर फाइन. आई एम ओके अगर वो ज़्यादा बात नहीं करती है तो, बिकॉज आई थिंक बाय नाउ आई हैव अंडरस्टूड हर एंड आई थिंक वी आर डूइंग वेल इन दैट केस. तो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम फॉर अस. तो आपको भी एज एन इंडिविजुअल वो डेवलप करना है रेजिलियंस कि यार ठीक है, then कल को जाके I shouldn't be pinpointing these traits. She'll be like, listen, I was like this since day one. तब तुमको बुरा नहीं लगा, आप क्यों लग रहा है? Right? तो these are the few things you should have it in your head. Now, कितना degree of resistance होना चाहिए before you break up or whatever? I think first thing you discuss with your family also. Your family shouldn't be taking or calling the shots. It's you, your life. So you're supposed to be calling the shots. You should be deciding कि whether this is, but it shouldn't come from a space of harming your family. मतलब मेरी फैमिली मना कर ही रही है because we see a lot of in the rural areas हम देखते हैं कि माँ बाप मान नहीं रहे हैं शादी के लिए, तो then you are supposed to elope and get married. Don't do that. Don't hurt your parents' sentiments, but always have an upfront conversation saying कि अच्छा ये चीज़ें हैं, I really like this person. अगर आपको नहीं पसंद कोई बात नहीं, I'll be here with you. Instead of forcing me to marry someone else. You are not supposed to let someone else call the shots. You are supposed to call the shots. The question was कि obviously we will take the final decision, but अगर direction ही थोड़ा ज़्यादा ही choose family या choose this, तो what do you think we should go ahead with? Then I think you are supposed to wait well. I think it's so subjective. Again, it's extremely subjective. I can't say कि ओ partner को choose करो या family choose करो. It's extremely subjective. आपका dynamic with the family कैसा है वो बहुत matter करता है, right? Again, for how long you've been with this person. For all this while, if you've promised commitment to this person, तो ये भी तो wait कर ही रही है ना तब से. And suddenly you tell her कि listen, my family doesn't approve of this marriage or this relationship. Let's call it off. No, just simply say that maybe we should just wait. Or if you think that waiting is not the right game for you, or this is something that you don't want to subscribe for, then just kind of fine. Then it's your choice to move out. But you're not supposed to call the shot saying कि अच्छा you know what, family नहीं मान रही, let me just break up. I think start में ये alignment लाना चाहिए. ये breakup के बारे में मुझे पूछना है कि what's the right way to break up? What is the right time to know कि it's time to break up and then how to do it? Okay, the right time to know is by figuring out that अगर आपको लग रहा है कि आप constantly struggle कर रहे हो relationship में, where you meet the person, right? Supposedly आप मिल रहे हो, but it's less of a good time and more of the tough time with this person. You feel as if you're constantly struggling with this person. तब आपको लगता है कि यार maybe it's time to call it off. क्यों? क्योंकि जब आपको लगता है कि आपकी चीज़ें अलाइन नहीं है, see again a lot of people I see, they're constantly crossing the bridge to, they're the only one crossing the bridge and the other one is just standing there. तो आपको लग रहा है आप ही constantly bridge cross कर रहे हो, or maybe you are burning yourself to keep the other person warm. Then that's when you have to know कि oh listen, I have to stop this. Because ये भी बहुत subjective है, क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि मैं तो constantly effort डाल रहा हूँ, वो नहीं डाल रही है या वो नहीं डाल रहा है. तो when you think that your partner is not putting the effort, just communicate. Maybe you just have different languages of love. Maybe your person is loving you in his or her way and you're loving him or her in a different form. तो communicate करो that you know what, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, I love it when you do this thing, so this is what makes me feel loved. Sometimes अगर आप let's say आप अगर मराठी में बात कर रहे हो, वो अगर तमिल में बात कर रहे हैं, तो how will you understand, right? You're supposed to convey and say कि look, this is what it feels like, this is what love feels like for me, and this is how the other person has to communicate. तो आपकी languages अगर different है तो आप communicate कैसे करोगे? तो you have to come to some conclusion, some midway कि अच्छा ठीक है, मराठी नहीं समझ रही है, तमिल नहीं समझ रहा है, let's just come midway. Let's find a sweet spot for both of us.
तो ये लव लैंग्वेजेस आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे हाउ टू ब्रेक अप, मतलब वो वाला पार्ट बच गया, हाउ टू से how बाय to बाय। break up, yeah. So how do you break up is you communicate with the partner by saying कि look, I think we've really tried hard to bring good times to this relationship and I think we've tried enough. See, ऐसा नहीं है कि आपको एक दो बार जम नहीं रहा and you called it off. You're supposed to put the effort. No relationship works without the effort. ठीक है, आप effort डालो. But अगर आपको लग रहा है कि it's been long time now and you feel as if you're just constantly struggling in a relationship, आपको लगता है कि आप aligned ही नहीं हो, आप negotiables, आपके non-negotiables match ही नहीं हो रहे हैं, आप you're not been respected, valued, all of these your Boundaries basics cross हो रही है. Not अगर seen, आपके heard. हाँ, आपको लग रहा है there's some kind of a manipulation in a relationship, right? आपको लग रहा है कि मैं constantly wait कर रही हूँ for this person to commit to me and हो नहीं रहा है, then you're supposed to call it off. How do you do that? By simply communicating with the partner saying कि look, I don't think it's working out. So let's be respectful towards each other. And how do you do it? Gradually by maybe going on a no contact period for approximately 3 months. Is usually that's how it, for 3 months it's a no contact period where you don't connect with each other. And let's say अगर 3 महीने के बाद भी there's some kind of a residual, maybe you make it a plan कि अच्छा ये date के बाद even if we have to communicate we can do it through email, maybe just communicate, that's it, whereabouts, whatever. A lot of us today, because social media has made it so easier for us to stalk each other, that shouldn't be the case, because then there's this residual feeling in you कि आप constantly stalk कर रहे हो इस इंसान को social media पे. What is she doing? What is he doing? Let me just figure out this, that. So you're constantly hanging on to the best low-lying fruit that's available to you, which is social media, which is friends. Especially जब friends होते तो आप पूछते हो कि अच्छा वो था क्या, वो थी क्या, what happened, this, that, because you're always curious to know about this person. So start in that. The one of the process to process the breakup is to start involving yourself. Maybe through journaling is a great way. By knowing yourself, know yourself. खुद को जानो, खुद को समझो. Why did you break up? Remember that. Because usually when the funny part about breakup is कि आप किसी के साथ हो, right? And suddenly आपने किसी के साथ breakup कर दिया है. Now suddenly there are days when you go you're absolutely great. But sometimes you're down in dumps. क्यों? क्योंकि you're missing that person. You're missing that person's voice, or maybe you want to communicate with this person. तो उस time पे ना you just have to remind yourself that why did I break up? It's just about reminding yourself of the reason behind it. So journaling is a great way. Getting into some kind of an activity is a great way to involve yourself. Third is to socialize with people around you. Sometimes because जब आप breakup या divorce के through जाते हो, so it's very tough to even focus at work. So at that time, just socialize with people around you. Have a good social circle, friends, family. That doesn't mean that you go out and drink and have fun and do all of this. You don't have to get into substance, but rather be more mindful. Get into meditation is a great way to kind of heal through, because you're going inward, right? And when you meditate, basically it changes your neural circuits. So because it changes your neural circuits, which means that it reduces levels of depression, anxiety. It makes you more empathetic and compassionate towards people around you. So it helps you also become more compassionate towards yourself. That's why meditation is extremely important. तो वो हो गया, journaling हो गई. Journaling करो ताकि आपको अगर लग रहा है कि you are not in the right headspace breakup के बाद, write it down. What are you feeling right now? Why are you feeling? And while you do that, नीचे tell yourself, what can I do about this? अब मैं क्या करूं जिससे मुझे ज़्यादा बेहतर महसूस होगा? These are the basic ways to deal with things. मेरे फ्रेंड सर्कल में आजकल ये काफ़ी फेमस हो रहा है, हमारे रोस्टिंग इज़ माई न्यू लव लैंग्वेज. तो ये हेल्दी बैंटर कितना सही है टू हील? ह्यूमर, हाउ इज़ ह्यूमर हेल्पफुल इन हीलिंग रिलेशनशिप? I think roasting like with your partner? Yeah, so roasting is actually, there's a very thin line. रोस्टिंग हेल्दी भी होती है, अनहेल्दी भी होती है. जब आपको लगता है कि आपकी रोस्टिंग किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को पिन पॉइंट कर रही है, दैट्स नॉट हेल्दी, राइट? वेयर यू आर बॉडी शेमिंग देम और शेमिंग देम अबाउट देयर वर्क, सो दैट इज नॉट रोस्टिंग,
right? That's So mean. that's mean. That's that you being extremely mean. So you're supposed to, that can actually trigger a person, and that can also inflict a lot of self-doubt in a person. Let's say you're making fun of a person's body shape, you're inflicting insecurity in that person, और तुम बोलोगे यार ये तो मजाक था, but maybe that person is not taking it as मजाक, उसको वो सीरियस लग रहा है. क्यों? क्योंकि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उस इंसान की हर एक चीज आपको सीरियस लगती है, स्पेशली फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव. आप हर एक चीज पर्सनली लेते हो, इट्स प्रीटी नेचुरल. तो इवन इफ इट्स अ बैंटर, you have to make sure that there is a thin line. You're not pinpointing someone's characteristics. You're not pinpointing someone's shape, size, their culture, their religion. You're not pinpointing on these things. Fun banter, to an extent, fine. But not to a level जहाँ पे आप किसी को literally mean तरीके में you're putting the person down. That's wrong. I have 2-3 more questions regarding this whole breakup scenario, you know. One is कि rebounds क्यों होते हैं? What's going on in people's minds जब भी लोग rebound करते हैं? And is rebound good? And how to if it's not, how to protect yourself against rebound? Rebound is usually, look, when you get out of a relationship, तो आपके अंदर एक वैक्यूम होता है, एक void होता है, emptiness होती है. क्यों? क्योंकि जब आप किसी के साथ थे तो आप constantly आपकी life किसी के साथ share कर रहे थे. You were sharing about your whereabouts, you were sharing about what were you doing in life, you were sharing about the nitty-gritties of your life, है ना? तो जब आप किसी के साथ पूरे दिन आपकी हर इमोशंस, गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, घर में क्या चल रहा है, क्या चीज़ है, काम पे क्या चल रहा है, you're discussing all of that with the person, and you're asking that person for their whereabouts and whatnot, for all the details. Since you were sharing yourself with this person constantly, and suddenly now there's no one to share your life with. अब आप दोस्तों के साथ उतनी थोड़ी बात करते हो, हर जितनी डिटेल में आप आपके पार्टनर के साथ बात करते हो, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हो, तो there is a vacuum or a void that's been created. तो वो आप किसी को pull कर लेते तो आप during that time, if you really find someone attractive, it's usually attraction at first sense. So when you see someone and you don't know how to deal with the void, with this vacuum. So you see someone who looks attractive is fine, you just get attracted to this person, there's infatuation involved, you start liking this person and start sharing your details with this person because there's someone to latch on to, right? So this is why rebound happens, because you don't know how to deal with the void, which is why I mentioned that you're supposed to go inward. You're supposed to journal. You're supposed to find what happened. I mean, what can I do about it? Get into activities, be in social circle. Rebound को कैसे prevent करें is by understanding that even if post my breakup, I'm supposed to heal. How do I heal through a breakup is by accepting that this is what has happened. Because whenever we go through some kind of a breakup or a separation, we go through grief. And grief has its own stages. The first thing that we do is we deny कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ भी है. That's the first stage. The second is we start bargaining with the person. Suppose if a partner came and said कि you know what, this is not working out. तो आप पहले deny करो कि ऐसा कुछ हुआ भी है. And then suddenly you bargain with this person, with this partner of yours, saying कि you know what, let's try and work it out once again. Let's just figure something out. कुछ तो करते हैं. Let's just, you know, you're trying your best to bargain with this person to get back together. अब बार्गेन नहीं चल रहा है तो तीसरा आता है स्टेज which is depression, where you realize कि अब बार्गेनिंग भी काम नहीं कर रही है. That's when the reality sinks in, saying कि यार ब्रेकअप तो हुआ है, how do I deal with it? There's so much of loneliness. That's when you have to turn loneliness into solitude, which means you have to start enjoying your company. You have to do things all by yourself. There are great therapies. You can do dance therapy, you can do art therapy, you can go for therapy, for counseling. Because if you're not able to deal with the separation, why is there a hesitation to go out and seek help? Yeah. अगर आपको कोल्ड है, आपको फीवर है, आप जाते हो ना डॉक्टर के पास, तो अगर आपको इमोशनली सही फील नहीं हो रहा है, जो आगे जाके आपको डिप्रेशन भी ला सकता है, तो आप अब जाके थेरेपिस्ट से हेल्प क्यों नहीं ले रहे हो, राइट? जैसे अभी आपको you know आपको कोल्ड शुरू हो गया and you realize कि अच्छा ये कोल्ड can actually go bad and it can turn into fever and can turn into flu and what not, right? तो आप immediately जाते हो ना, तो
इसी तरह से अगर मेंटली सही फील नहीं हो रहा है तो why don't you seek help? तो take therapy, do these different things, socialize with your friends and family, not involving substance, but just socialize with them, sit with them, communicate, talk about it, cry it out. Okay, it's fine to let your emotions out through journaling. All of this is extremely imperative. ये करने के बाद जब आपको लगता है कि then comes the fourth stage, which is acceptance. कि that's when your mind starts registering कि this has happened and gradually I am getting into the stage of healing. That's the fifth stage. When you accept, so a lot of people during that third stage, it's like make it or break it. Either they make through or they slip into depression, or maybe they just slip into substance abuse, or they get into any behavior which are not healthy in nature. So a very unhealthy coping mechanism starts. So you have to be careful of what are you doing during this phase. So rebound आप कैसे avoid कर सकते हो is by knowing that I have to work on myself. That's when I will not attract someone जो मुझे पता है कि शायद I'm just trying to fill the gap or fill the void right now because I don't have him or her right now. और आप आपके ex के साथ can you remain friends after some time? You can't. This is the biggest question I keep getting. Can you be friends with your ex? No. As a woman or as a man, like both gender. Both. You can't be friends with your ex. Why can't you be friends with your ex? Tell me. अगर आपका किसी के साथ इक्वेशन रहा है एक तरीके का, right? Romantic in nature. तो आप आगे जाके अगर दोस्त भी बन रहे हो, somewhere or the other, sometime in your life, आपका जो communication होगा ना, it will revolve back to how things were, how things could have been better. Oh, you remember we did this. You will always talk about those past instances. Why? Because it gives you a feel-good factor when you talk about past, the good times. धीरे 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 वो गुड टाइम से लेके आपको पता नहीं चलेगा पर आपकी कॉन्वर्जेशन सडनली ब्लेम गेम पे आ जाएगी कि अगर तुमने ये समझा होता तो हम आज अलग नहीं हुए होते. That's when things start changing and it's so seamless in nature, this whole transition, that you will be like, oh, I'm in a rabbit hole all over again. And you don't realize. You can't be friends with your ex. This is the reason. क्योंकि आपकी equation अगर किसी के साथ रही है, वो कभी भी change नहीं होती. And even if it does, that happens only after 7 to 9 years. So even if you want to be friends with your ex, be after 7 to 9 years. Because you have become a different person by then. You become a different person because every 7 years to 9 years, you're changing yourself as an individual. You're evolving. हम लोग एक वीडियो देख रहे थे एस्तर पेरेल का. उसने एक मस्त लाइन बोला. उसने बोला कि आने वाले समय में लोग मल्टीपल शादी करेंगे, ठीक है, सब, बट एवरीवन विल हैव अ चॉइस टू मैरी द सेम पर्सन वापस. तो what do you see future, how is the relationship evolving 2050 में, how will companionship look like? So if we talk about the future of dating or future of relationship, then it's pretty clear about कि पहले के जो generation थी उनको पता नहीं था what they really wanted in a relationship. Okay, they didn't know. A lot of us, especially talking about, let's say, baby boomers, talk about millennials also. When we talk about us as millennials, obviously a lot of times we didn't know. आज बात हो रही है relationship के goals के बारे में. आज बात हो रही है कि हम aligned हैं कि नहीं है. आज बात हो रही है कि does he value my career or not. पहले वो चीज़ें नहीं थी. So there was a lot of compromising factor in a relationship. If we talk about the future of relationship, where we've seen as per studies also and reports that people are going to be way more aware of what they want and they will stand by it, which also means कि a lot of people say कि देखो एक बहुत thin line है. लोग कहते हैं कि stand by it also means I'm going to fight against it. No, people are not going to fight, but they know where do they stand and what do they deserve. Which also means that you are not going to get into any kind of a compromising situation. जैसे कि people are becoming more aware that if I like this person and if this person is not into me or is just looking for a temporary comfort through me, and if I am not
okay with it, I'm not going to sign up for it. So I think people today are becoming more aware of the dating space. They are becoming more wary of whom are they dating as opposed to how things were पहले. पहले कैसे था, जो सोशल सर्कल में हमको लोग मिल जाते थे तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे कि यार अब पता नहीं कि दूसरा इंसान कब मिलेगा मुझे, राइट? तो आई थिंक आज के तारीख में वो सीन नहीं है बिकॉज ऑफ डेटिंग एप्स. द डेटिंग पूल हैज एक्सपैंडेड अ लॉट मोर, like it's become bigger also because both the genders, all the genders today are actually going out. They are seeing the worldly affairs, meeting different people, which means that उनका dating जो social circle है बहुत ज़्यादा expand होते जा रहा है, which means there are possibilities of finding good potential person also that you don't have to compromise. So one, I think for a lot of people, what Esther Perel mentioned also, कि there are chances of people getting married multiple times is for someone जिन्होंने शायद अपना goal नहीं समझा and just out of infatuation got married to someone or work with someone and suddenly then they realize, oh, ये तो मेरे से match ही नहीं खा रहा है, now what? So that's when you get into another marriage or a relationship. So I think we have to change this whole game of relationship for future, saying कि please be aware of what are you signing up for. Be aware of it. Don't just get into it. Why? Because there's a void in you. See, for all of us, social media has made it way more worse. Let's be honest. I'm not saying just social media, media in general. When you watch a movie, I get a lot of these questions from youngsters कि यार मैं 25 साल का हूँ, अभी भी single हूँ, 28 साल का हूँ, अभी भी single हूँ, I don't have a partner, this, that. My point is, you should love yourself and relationship should be more like the cherry on the cake. You are the cake. The relationship should be the cherry on the cake. अगर आपने चेरी निकाल दी तो क्या आपका जो आपका खुद का जो एक इम्पोर्टेंस है या what are you as an individual वो चेंज हो जाता है क्या? नहीं. Cake still remains the same. When you remove the cherry, does the taste of the cake change? No, it stays the same. You can still eat the cake and taste the same, right? While the cherry was on it. So, relationship should aid your life in a better sense. मतलब it should help कि आप यहाँ पे हो ना तो और अच्छी बनाता है. But that doesn't mean कि अगर relationship नहीं है, आप अकेले हो, मतलब your relationship, your life is completely down in dumps. No. So relationship should help you get better. Talking about future generation, you have to know that what are you signing up for, which also means that focus on yourself a lot more, which means prepare yourself, build resilience, ताकि आप सही relationship पे sign up करो, ना कि जो सामने आया चलो because मैं अकेली feel कर रही हूँ या अकेला feel कर रहा हूँ, let me just get into this relationship. Why? Because this relationship makes me feel good. Then in that case, there's a lot of codependency in relationship. क्यों? क्योंकि you're dependent on this partner to emotionally satiate you, right? And even that person is trying to be with you to fulfill the lack in her or his life. तो आप क्या कर रहे हो? There's so much of codependency. Whereas in a relationship, there should be you being a strong individual, she being a strong individual, and you both come together to make it all the more beautiful. There should be interdependence and not codependence. अब ये codependence में क्या हो जाएगा? एक इंसान अगर थोड़ा strong बनना शुरू होगा, ये हट जाएगा, तो ये तो there's a fall for the other person, right? There shouldn't be codependency. Codependency is the worst thing in a relationship. Why? Because you're constantly seeking comfort in the person. What if that person is not in the state today to give you that comfort? You're going to be shattered. So don't let that happen. Which is why codependency is extremely toxic. जैसे हम बहुत सारे टॉक्सिक ट्रेट्स की बात करते हैं, नार्सिसिज्म की बात करते हैं, तो कोडेपेंडेंसी भी वही है. इट्स ऑल्सो टॉक्सिक. तो फ्यूचर आई थिंक एंड दिस इज समथिंग दैट आई कीप टेलिंग आगे की जनरेशन ऑल्सो, कि बी अवेयर ऑफ वॉट डू यू वॉन्ट इन अ रिलेशनशिप. डोंट जस्ट साइन अप फॉर एनी थिंग दैट कम्स जस्ट बिकॉज यू आर अलोन. लर्न टू लव योर सेल्फ सो मच ताकि यू एन्जॉय योर ओन कंपनी, ताकि आपको ऐसे नहीं लगे कि यार मैं खुद बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, तो लेट मी हैव अ कंपनी. एन्जॉय योर कंपनी. सो एन्जॉय योर सॉलिट्यूड.
only then you will be in a better space to enjoy the other person. See, if you won't enjoy yourself, how will you enjoy the other person? You won't, right? तो आपको लगा कि ये इंसान है, इसके लिए मुझे फुलफिल लग रहा है, बट जब ये इंसान नहीं है तब आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैटर्स. मेरा रीडिंग फ्यूचर में सी AI person, AI robotics person, relationship is a function of time and effort कहीं ना कहीं, और इसके around there's a lot of upsurge in Chinese side, China especially, AI companionship, जहाँ पे वो ऐसे मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं कि आपके इमोशनल नीड्स एटलीस्ट अच्छे से फुलफिल हो गिवन योर पास्ट बिहेवियर, पास्ट एक्शन. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, जो मेरा रीडिंग है, कि the concept of codependency on another human will become a thing of past. No. In fact, with this, I'll won't it tell you- increase? In fact, I'll tell you. There's a possibility. No, so there's no increase or as such, but there's a catch to it. तो आप कह रहे हो कि because of we are seeing the rise in AI also, which also means that we are seeing rise in a lot of this is something that I came across recently. There's some AI tool for relationship as a relationship coach. So you can speak with this AI tool, speaking about your relationship problems, and this AI tool will give you the suggestions and whatnot. Me as a coach, I definitely wanted to check it out. How does it work? And I realized after a specific period, that tool was giving you same answer. वही चीज repeat हो रही है. Again, we have to understand that AI will not be able to overcome a human connection, is because in the end we all need one-on-one tailor-made connection with each other. See, आप जिस भी स्टेट में हो, आप कितना भी ट्राई कर लो थ्रू AI, बट आप जितना इन पर्सन एक इंसान को समझ पाओगे ना, इतना AI नहीं समझेगा. Because we have change, there's a change in our emotions every moment, right? तो ये आप जब सामने किसी इंसान के साथ बैठ के बात कर रहे हो ना, तो वो इंसान समझता है as opposed to what an AI is understanding right now. More dimensions. Yeah, more dimensions, more emotions, more, I think, spheres of emotions. There's spectrum of emotions. See, AI understands anger, sadness, but AI does not understand what's agony. AI does not understand what's dismay. As of now, जिस तरीके से वो लोग डेवलप कर रहे हैं ना इस चीज़ों को, मैं आप तो बोल रहा हूँ रिलेशनशिप कोच, मैं बोल रहा हूँ गर्लफ्रेंड AI हो सकती है या बॉयफ्रेंड AI हो सकता है इमोशनल नीड्स के लिए. बहुत रिसर्च आ रहा है, एंड द वे इट्स, हाउ डू यू नो AI डजंट हैव एन इमोशन? एनालॉग इमोशन हो सकता है उनको. आप अभी भी ChatGPT को थोड़ा सा रोस्ट करोगे ना, इट डिस्प्लेज एनालॉग इमोशन. इमोशन at its core is chemical reaction, at its core is mathematics. Human body में भी वैसे ही एनालॉग इमोशंस होते हैं AI में, एंड द वे इट्स डेवलपिंग, देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल. एंड मतलब आई एम नॉट सेइंग कि होगा, बट प्रोबेबिलिटी होना इट लुक्स वेरी नेचुरल, क्योंकि कितना एफर्ट जा रहा है. एक डिवोर्स होता है, यू आर गॉन फॉर अ ईयर और 6 months, और वन रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जो टाइम और एफर्ट वेस्ट होता है लोगों का, AI में वो भी नहीं है. And it understands you well. It gives you. I'm just curious to see. So I'll tell you, there's a very good answer to this. Say we humans long for a connect, second for touch. Haptics आ रहे हैं. आपको टच चाहिए ना, हैप्टिक्स आ रहे हैं. जो हैप्टिक्स में बता दो, मस्त एक टेक्नोलॉजी है जो आप ऐसे पहन सकते हो, एंड इट कैन इवन ऑल्फैक्टरी हैप्टिक्स आ रहे हैं, तो स्मेल भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक सेंस. वो सब आपको AI भी पुश करके फील करा सकता है. आप वो गेम देख रहे हो जिसमें खेलते हैं, मतलब आप खेल रहे हो गेम, ऐसे हिट होता है आपको. वो रावण में भी था आई थिंक, ठीक है, आई डोंट नो. तो ये भी वो लोग डेवलप कर रहे हैं. तो सेंस ऑर्गन के साथ और माइंड के साथ खेलने के लिए AI वर्ल्ड और हैप्टिक्स वर्ल्ड बहुत, it's $1 billion industry. I agree, but again, the kind of emotion, kind of connect that you will build in person, that no AI can overcome when it comes to, because आप कितना भी try करो, आप कितना भी develop कर लो, but at one point you need a human connect, a human touch to understand the person a lot more. आप कितना भी haptics के through आप
आपके tools के through, आपके evolution के through, no matter how much you try to induce certain emotion in a person through touch or whatever, you still need a human. By default, I'll tell you why. Because we as humans, we function on a different dimensional levels, right? And right now, even if we don't speak anything, but I'll still kind of, because we are in the same energy circle right now. ये आप किसी robot को बिठा दो, you will not have. आप उसके साथ बात करने की कोशिश करो. After one point, you actually need someone to have that connect. Nice. So we are a large young population. This young population is going to become old. Yeah. I think replacement rate in India is actually reducing. I think we're close to now. Replacement rate 2. Yeah. The score is 2. Yeah, it's 2. If 2.5. it's less, the population falls. Yeah, it was 2.1. Now it was it's 2. 2.1 2 years back, and now it's 2. So I'm saying it's declining. Declining, yes. That means we are potentially in the next few years producing less kids than we were. I'm not saying yet we are. Yet we are at 2, which is exactly, so we'll be the same population. But now it's coming down. The trend is coming down. So how are relationships going to be? How is this world going to be structured in all the reading and studying that you're doing? So it's basically a situation of crisis for us, because what Japan is going through right now, where like a huge amount of population has turned old, which also means कि एक time के बाद there's so much of dependency in humans, right? And this is what we are scared about when it comes to India's future. So as per a study, it was being seen that 2036 and by 2046, a large amount of our population is going to be above the age of 60. And just a quarter to quarter part of the population is going to be less than 15. So it's obviously a concerning, alarming sign for us. क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा human dynamics कैसे change होगा, बहुत सारी dependency आने वाली है at that one point. But there are a lot of things we have to work in terms of our relationships, which means I see a lot of people, they don't get married. I believe that हमारे जो पहले के बोल के गए ना कि जल्दी शादी करो, by the age of 25, 30 के बीच में get married, and by the time have kids, all of that. Why? Because it's just not to do with your biological clock, but it's also to do with your kids' space, or maybe that gap, right? It's going to be well defined agar aap. So I think gradually you also see this trend is kind of taking over. We see thoda youngsters getting married, but there's a huge amount of population who is even getting married by the age of 26, 27, but not having kids. So I think I do believe that one of the reasons why people don't want to do this is because they are not ready for responsibilities. They are not okay in terms of taking up someone else's responsibility. They also take kids as nuisance, right? But that shouldn't be the case. I think if anything that kids really bring, it's joy, and it's that moment of fulfillment throughout your day. If you've had a bad day, you come back home, when you see that, that's your creation, it gives you that sense of fulfillment towards life. So of course it does come with responsibilities, its own share of ups and downs, all of it. But also at the same time, we see that generation, आगे की generation को लेकर के भी, we have to see that timely marriages and timely kids are extremely, extremely important. That's a good way to end this discussion. I think we've touched upon a lot of topics, so thank you very much, Ekta, for taking us through My pleasure. This roller coaster of the mind. Yes, and I think we have a lot more to discuss also. Absolutely. So we've opened some topics. Yes. Parenting, kids, marriage. We need to touch upon those things, and we look forward to have you again. Thank you so much for having me. Looking forward to a lot of great stuff together. So don't forget to like, share and subscribe, and make sure that you mention it in the comment section that we want another episode with Ekta. See you soon.